Hello students, here I have come up with one more challenging problem in electrodynamics. The problem is like this: a flat conducting disk of radius r, and thickness b. Let rho be the resistivity of the disk. Every element has a resistivity. Let this disk has a resistivity of rho. A sinusoidal magnetic field B0 cos omega t. It's a sinusoidal magnetic field. This magnetic field changes sinusoidally with time. With maximum magnetic field B0 is created perpendicular to the disk. Calculate the average power generated by the disk. The question is like this. Have a look. There's a magnetic field which is perpendicular to the disk. There's a disk, the magnetic field is perpendicular, but that magnetic field is changing in time. So that changing magnetic field, that is changing flux through the disk, it will produce induced EMF or electric field in circles. So अगर magnetic field ऐसे कुछ है, ऐसे, और वो change हो रहा है through the disk, it will produce circular electric field. Circular electric field will move the electrons in circles, in circular paths. That means this disk will get heated up. And how much heat this disk will generate in 1 second, that is the power generated by the disk. So it needs to be understood like this. It's a disk here, you produce magnetic field perpendicular to the disk, and when magnetic field changes, it produces electric field in circles, and in those circles there is disk. There's disk in those circles, and it will surge the electrons in circles, which is generally called as eddy currents. When these circular electrons move, they heat heat is produced inside the disk, and heat gets generated, and disk gets heated. So it will generate heat per second, that is power. So I want to know how much power is generated in the disk. It can be used commercially if we do such an experiment, or if we do such thing, make this plate as a heating plate. Pass the magnetic field through the plate, change the magnetic field, and the plate will get heated. And it will be commercially used as a device. Anyway, so the question is how much power is generated? How much power is generated in the disk, or how much heat is generated in the disk in 1 second? That is power. Okay. So first of all, the currents are in circles like this, because induced EMF will produce the current. So the question is, first of all, the challenge is, what is the resistance of this disk? Resistance of anything is measured that is subject to the current flow. Current flow ही फैसला करता है कि length of the conductor क्या है और area of cross section क्या है. जैसे अगर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है. वो फैसला लेंथ कंडक्टर का क्या है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का क्या है, वो करंट फैसला करेगा. करंट, बिकॉज करंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द लेंथ. जो पार्ट करंट को पैरेलल आता है वो लेंथ कहलाएगा. जो पार्ट करंट को परपेंडिकुलर आएगा, ये सेक्शन, वो एरिया कहलाएगा. तो करंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड करंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो कंडक्टर का लेंथ क्या है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा. वो इस पर डिपेंड करेगा करंट का डायरेक्शन क्या है. तो वो भी एक चैलेंज है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है. तो पहले हमें ये देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, सो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दीज सर्कल्स. सो लेट मी get the resistance of this much of conductor. तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है. तो अब आप मुझे बताइए लेंथ क्या है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है. लेंथ क्या है इस कंडक्टर का, लेंथ जो मैंने एलिमेंट लिया है बीच में, सर्कुलर एलिमेंट, इसका लेंथ क्या है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है थ्रू विच द करंट फ्लोज. किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को करंट पास करता है वो देखना पड़ेगा. दैट वी हैव टू से. So let me find the resistance of this part of the disk, a little part of the disk. मुझे इसका रेजिस्टेंस चाहिए. चलो ओके, dr
प्राइम, क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ दिस। और ये जो मैंने ये एलिमेंट लिया सर्कुलर एलिमेंट, इसका रेडियस क्या है r, और इसका विड्थ क्या है इस एलिमेंट का dr, और थिकनेस क्या है इनसाइड, थिकनेस क्या है दैट इज b। तो करंट यूं जा रहा है ना, तो वो इस एरिया के थ्रू क्रॉस करता है, इस एरिया के थ्रू, या इस एरिया के थ्रू क्रॉस करता है, इस एरिया के थ्रू क्रॉस करता है यूं। तो ये एरिया हुआ ना, ये एरिया हुआ, ये एरिया हुआ, करंट ऐसे कर। और यू हैव फॉर्मूला रो एल बाय ए फॉर द रेजिस्टेंस। ओके, रो इज द सेम resistivity of this element. What is the length of this conductor element? That is 2 pi r, obviously. And what is area? इसको क्रॉस कर रहा है dr को, dr into this b, thickness, जो अंदर की ओर थिकनेस है that is b, जो ये b thickness, it is palate is like this is the palate, तो थिकनेस अंदर की ओर है, that thickness and this r, this thickness and this r is the area of cross section through which the current passes. ये concentrate on this is dr, अंदर b है, तो dr into b is the area through which the current flows, right? Okay, now I have to find, let me see what I can do. It is 2 pi rho r by b into dr. Okay, let me keep it like this. What is induced EMF in this element? इस एलिमेंट में कितना इंड्यूस्ड एमएफ प्रोड्यूस होगा जो करंट मतलब क्रिएट करेगा, बट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच विल बी क्रिएटेड इन दिस एलिमेंट डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस विल गिव अस द करंट। मुझे देखना है कि ये जो एलिमेंट है, सारा एलिमेंट ये जो है, इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट आई विल फाइंड डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस विल बी द सर्कुलर करंट दैट्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इट इज ओके, ये एक इक्वेशन है, बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, माइनस ओके डी फाई बाई डी टी, दैट इज माइनस डी बाई डी टी। व्हाट इज फाई फ्लक्स थ्रू दिस, इस सर्कल के अंदर क्या फ्लक्स है, दैट्स पाई आर स्क्वायर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी जीरो cos omega t, that is already given in the equation, given in the question. So induced EMF is equal to minus pi r square b zero, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू ओके माइनस माइनस प्लस पाई r स्क्वायर b जीरो ओके ओमेगा ओके साइन ओमेगा टी। सो मुझे इंड्यूस्ड EMF भी मिला मुझे इस करंट इस एलिमेंट में, जिसके इस एलिमेंट में मुझे क्या मिला, इंड्यूस्ड EMF। मुझे इसका रेजिस्टेंस भी मिला। तो अब मैं कुछ करूंगा, सो व्हाई नॉट फाइंड डायरेक्टली व्हाट यू कॉल एज द पावर, a little power generated in this element, then I will possibly integrate for the whole disk. How much power is generated in this little element of the disk, वो मैं निकालना चाहता हूं, that I want to find. अगर ये रब करूंगा तो मुझे ये यूज करना है। ओके, पहले मैं लिखूंगा एक इक्वेशन। सो व्हाट इज द पावर, लिटिल पावर, dp, little power generated in this element, that is E square by r, dr prime, V square by r, that formula, the power generated V square by r, that is the formula that we already know. E square, what is E square? That is this pi square r4 b0 square ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका भी स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2 पाई रो आर बाय बी डी आर, ये वाला डी आर डैश, ये वाला सब्स्टिट्यूट किया। चलो, नो आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम हियर। So what should I write? So dp is equal to, okay, this gets cancelled, or it will become r cube here, it will be 2, so it is pi b0 square omega square sine square omega t, b is here, write b here,
R was here, I will write R cube there, 1 orbital cancel, divide by 2 rho. B is here, pi is here, and dr is here. Integrating, but I will integrate only this, only here, because this is constant of integration. Matlab integration will, we are integrating over r, there is no r from here to here. So total power is equal to b pi b0 square omega square sine square omega t divided by 2 rho. So it is integrated from 0 to capital R, from here to here. It will be integrated from 0 to capital R, right? So it will be R4 by 4. ठीक? What is average power? Because this power is a function of time. The power changes. It becomes 0 maximum, 0 maximum, 0 maximum. So what is the average power? Sin square omega t का average value ही निकालना पड़ेगा. So sin square omega t का average value है 1 by 2. So it is 1 by 2 here. So it is b pi b0 square omega square sin square omega t. No, not sin square omega t now, because it is 1 by 2. R4 by, it is 1 by 2, it is 4, it is 2, 16 rho. ठीक? This is the average power produced in the disk in the form of the heat. So a disk is there. You are passing a magnetic field through the disk perpendicular to it, changing that magnetic field. Electric field will be produced in circles, and that produces the induced EMF, and circular currents will be produced in the disk, and the disk will get heated. It is a plate, heated plate. It can be used. Engineers can adjust these values. They can adjust these values, and they can get a good power out of this disk. They can adjust frequency, they can adjust resistivity, they can adjust this omega. When they adjust these values, they can get a good supply of power from a disk, which is in the magnetic field, changing magnetic field. And what is changing magnetic field? An electromagnetic wave can do. In electromagnetic wave, we have a changing magnetic field, or we can have a AC current which can produce the changing magnetic field. So this was one more problem, challenging problem, but you need to understand this, how eddy currents produce these, how eddy currents are produced by the changing magnetic flux. This was one more challenging problem. I will continue with the challenging problem series. So don't forget to watch lectures on the YouTube and download my app, Tantra Physics class. Okay, thank you.